नेक्स्ट टॉपिक इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? पावर शेयरिंग ज़रूरी होने के दो कारण हैं। पहला प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मॉरल रीज़न। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्रूडेंशियल रीज़न? इट इज़ बेस्ड ऑन careful calculation of losses and profits, gains and profits, that if something happens how it will result, and if something doesn't happen how it will result. Prudential reasons are usually contrasted with decisions based on moral consideration. It is prudential reason, we can say that it is a practical way of thinking, and moral reasons, it is the way when we think that morally it should be done. So both the concepts are completely different. First prudential reason says that power sharing is important because it reduces the possibility of conflict between social groups, because equal, as we see that both the linguistic groups are given equal opportunities, equal members, equal ministers in Belgium, in both central and state government are given, so it has reduced the chances of conflict. Second point, social conflict often leads to violence and political instability, and whenever there is political instability, agar political instability hai to country can never develop. So if for economic development it is always advisable that political stability should be there in the country. Initially it seems that it is good if majoritarianism policy we are adopting, it is good, लेकिन लॉन्ग रन में majoritarianism policy सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि कुछ टाइम बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगता है कि उन्हें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हमेशा मेजॉरिटी को ही उनके ऊपर रूल नहीं करना चाहिए। तो लॉन्ग रन में majoritarianism इज नॉट सक्सेसफुल। ऑलराइट, असली प्रूडेंशियल रीजंस कहते हैं दैट पावर शेयरिंग always bring better outcomes, हमेशा अच्छे रिजल्ट देती है पावर शेयरिंग। वी शुड शेयर द पावर with majority as well as minority, and all region and religion should share the power to run a government successfully. And now why power sharing is desirable? It is desirable for certain moral reasons. First thing is, power sharing is a very spirit of democracy. In democracy we are supposed to share power. It is as per moral we should share the power with different groups living in the country. In democracy, secondly, second moral reason is, in democracy the people, they have right to be consulted, because it is for them the rules and regulations, the law has to be made, and the people who are to be ruled by these rules and regulations, they should be consulted. So how are we participating in this? We are giving vote, we are electing our representatives who are making लॉज, बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हमारे लिए ही बना रहे हैं, तो हमें रूल करने, तो हमारे को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इजीली एक्सेप्टेबल है। Thirdly, in India, members from different political parties get elected to the legislature and participate in the working of the government. कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन, ना ही तो लेजिस्लेचर, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही जुडिशरी एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में झांककर इंटरफेरेंस कर सकते हैं। दे ऑल हैव टू वर्क सेपरेटली। Such a separation of power ensures that none of the organ can exercise unlimited power. And this system is also known as system of check and balances, because each organ checks the other. This results in a balance of power among various institutions. And this arrangement is called a system of checks and balances. Say for example, the judges are appointed by the executive, but they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. Next topic is forms of power sharing. Children, in democracy, people are the source of all political power. People, they rule themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, everyone has a role in the shaping of public policies. So in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible.
And in modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. Number one is horizontal distribution of power. In horizontal distribution of power, power is shared among different organs of the government, which is legislature, executive and judiciary. Why we call it horizontal distribution of power? Because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. हर ऑर्गन की, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, इनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है एंड दे मेक लॉज अंडर देयर ओन जुरिस्डिक्शन. कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन, ना ही तो लेजिस्लेचर, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही जुडिशरी एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में झांककर इंटरफेरेंस कर सकते हैं. दे ऑल हैव टू वर्क सेपरेटली. Such a separation of power ensures that none of the organ can exercise unlimited power. And this system is also known as system of check and balances because each organ checks the other. This results in a balance of power among various institutions. And this arrangement is called a system of checks and balances. Say for example, the judges are appointed by the executive, but they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. Second form of power sharing is the vertical division of power, in which power is shared among government at different levels. Like in India, we share it at central government, then at state level, state government, and then local government, and then Panchayat Raj. So we see that neither central government can interfere in the work of state government, nor state government can interfere in the work of central government. Separate jurisdiction for work is given. The government at the state level are called by different names in different countries. In India, it is known as federal division of power. Children, in India, we have central government at the top level, which is making laws for the entire country. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए लॉ बनाती है. स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए हम लॉ बनाती है. और हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के लिए अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है. हमारे इंडिया में जो सारे कंट्री के लिए रूल बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. और द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल और एट द विच आर वर्किंग एट रीजनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल, दे आर नोन एज स्टेट गवर्नमेंट्स. और इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है. There are many countries where there are no provincial or state governments. In India, there are different levels of government: central government, state government, then we have local government, and then we have Panchayat Raj. And the constitution clearly lays down the powers of different levels of the government. कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में एंटर नहीं करेगी. ना ही स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में एंटर करेगी. स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई हैं, जो इंडिपेंडेंटली लोकल गवर्नमेंट यूज़ करती है. एंड दिस arrangement is called vertical division of power. It is found in Belgium but not in Sri Lanka. बेल्जियम ने पावर शेयर करी अपने डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में और पीसफुली कंट्री को मैनेज किया, जबकि श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद कंट्री में सिविल वॉर हो गया. सो we end this topic. This is vertical distribution of power. Next is division of power among different social groups. This is known as that when power is shared among different social groups, means like in society we have, like in India we have scheduled castes, scheduled tribes, which comes in under minority. So when power is shared among different social group, this can also be known as community government. And this type of arrangement
is made to give a place in the government to the diverse social groups who feel ignored by the government. It is very important that we give a proper position. We should give recognition. हमें जो लोग बहुत समय से हमारे कंट्री में बिकॉज ऑफ सम रीजंस जिनको कंट्री में सोसाइटी में प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिला था, उनको अगर हम अपने गवर्नमेंट में प्रॉपर रिकग्निशन देते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं, सो दिस इज़ नोन एज शेयरिंग द पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. कुछ देशों में स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया जाता है जिसके कारण सोशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या वुमेन, ये लोग, इनको एक स्पेशल पोजीशन दी जाती है जो कि अपने आप को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट कर पाते हैं. एंड द लास्ट वन इज पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. चिल्ड्रन, as we know that different political parties are there in our country. ये जो अलग अलग political parties हैं, आपने अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए जिसमें देखा हर पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो के साथ ग्राउंड में आती है और इलेक्शंस कंटेस्ट करती है. हर पॉलिटिकल पार्टी को ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ऐसा मैनिफेस्टो डालना चाहिए जिससे सभी जो सिटीजन्स हो उस मैनिफेस्टो को पढ़कर अट्रैक्ट हो और उन्हें लगे कि ये पार्टी उनके लिए बेटर रहेगी और हमें वोट करें. So this kind of power sharing competition ensures that power does not remain in one single hand. क्योंकि मल्टी पार्टीज हैं तो अलग अलग पार्टीज इलेक्शन में आ सकती हैं. डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है that citizens of the country, they should have freedom to choose from the various contenders. अब मल्टी पार्टी सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट पार्टीज हैं और हम वोट उसको देंगे जो हमें सबसे अच्छा लगेगा, लाइक दिस पार्टी वुड बी बेस्ट फॉर अस. Or such competition ensures that power does not remain in one hand. If we are not satisfied this year with this party, maybe next year we will give vote after next 5 years we can vote for some other party. So in a democracy we find interest groups such as traders, businessmen, industrialists, farmers and workers. They also play an important role. Pressure groups put pressure on the government for certain things. प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस करता है टू टेक एक्शन और टू मेक चेंजेस ऑन अ स्पेसिफिक इशू. इसके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे ट्रेड यूनियंस या फिर वर्कर्स यूनियंस या टीचर्स यूनियन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स. Important pressure groups like economic pressure groups, professional or occupational pressure groups, religious pressure groups, promotional pressure groups. These are the pressure groups who put pressure on the government so that government is taking decisions in their favor. With this we end this video, children. With this I end the topic power sharing. I hope the concepts are clear to you. In case you are finding it easy or you have some suggestions to give, you can give suggestions what else you want. You can give in chat box that which is the next topic that you want. I will be posting a video within a day or 2 days time so that you feel comfortable to study.